Jai Gurudev to everyone in this new episode of Guru Siyag Yoga Theory and Practice Part 2. So the last week we had one session with Mr. Bhamar Singh ji and he is with us again. Jai Gurudev sir, Jai Gurudev, Jai Gurudev. जय आपसे थोड़ी बातचीत करूं कि पिछला जो एपिसोड था उसको करीब 1100 लोगों ने देखा. Almost 1100 people have watched that first episode of Theory and Practice of Guru Siyag Yoga. So बहुत अच्छे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू कीजिए. So we are here with the second episode of Theory and Practice of Guru Siyag Yoga. So आप जहां आपने पिछली बार बात छोड़ी थी या जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाउ टू अंडरस्टैंड गुरु सियाग योगा, व्हाट गुरु सियाग योगा इज, सो उसी से आप कंटिन्यू करें सर. जी, अपनी बात धर्मेंद्र जी पिछली बार हुई थी कि भी हम साधक जैसे जैसे वो नीचे से यात्रा करके और जैसे वो आज्ञा चक्र तक आता है और उसके बाद फिर वो दृष्टा भाव में आ जाता है, तो फिर वो कर्ता भाव में नहीं रहता है, तो कर्ता भाव में नहीं रहता है तो दृष्टा भाव के आने के बाद वो जो कर्म फल है आगे उसके लिखे नहीं जाते. फिर वो जितना ही जाप करता है तो फिर वो डे बाय डे अंदर सहस्त्रार में बैठे गुरुदेव की तरफ बढ़ता रहता है. वो समझ जाता है कि सारे संसार को वो गुरुदेव की पराशक्ति माँ पुण्य शक्ति चला रही. Okay, so Bhamar Singh ji had explained that when we were discussing last time, we talked about that more and more we, as a practitioner, as a disciple, more and more we get into, in the state of being an observer, drashta. Then new karma are not formed for us because we are not the doers. We are merely an observer. So all new karmas are not created for us, neither we have to pay for that. And more we do mental chanting of the mantra given by Guru Siyag. We come more closer to Gurudev within us. He is within us, he is not outside anywhere. And then we also try to understand, and this, this understanding is developing through more mental chanting of the mantra, which helps us understand how Kundalini, the mother of universe, works. जी सर. धर्मेंद्र जी, अपना सेशन होने के बाद मेरी अगले दिन चैन से बात हुई. वो सेशन उसने देखा, मेरे से बातचीत की, तो ये सारी व्यवस्था देखो पराजगत की कैसी अंदर की व्यवस्था है कि मेरे से जो बात कराई गई वही कराई गई जो चेन की जरूरत थी. और ये सारी बातें करने के बाद चेन ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ 2 साल पहले, जिस टाइम उसको विशेष मुद्राएं हुई थी और गुरुदेव ने उसके सर की जो है इस तरह की एक अलग तरह की जो वो क्या कह सकते हैं कि उसकी सफाई की गई, और उसको जैसे आप कंप्यूटर को झाड़ फूंक के तैयार करते हैं पूछ पाछ के, तो उसी हिसाब से उसके ब्रेन को साफ करके इस काम के लिए तैयार किया गया. उस टाइम जो उसको मैसेज दिया गया वो मैं पहले ये बता दूं, फिर बताऊंगा मैसेज क्या था. तो मेरी बात हुई तो पहले मैं जैसे आज सब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो मैंने उसने यही कहा भी आप अपना अनुभव बताओ और कैसे बढ़े क्या. उसका प्रश्न ये था कि आपने कहा था गुरुदेव से जुड़ने से पहले आपको दिखा दिया गया था सारा कुछ. तो उसमें मैंने कहा ये एक सब्जेक्ट है पराजगत का, जब तक गुरुदेव आपको नहीं बताते हैं, और चाहे पंकज श्री भले ही बता दे, पर वो मजा नहीं आएगा आपको. मोहन सिंह और तो वो दूर की बात है. जो चीज गुरुदेव अंदर से समझाएंगे संतुष्टि वहीं होगी. आप कोई भी साधक होगा, बाहर वाले कितना ही बताए उसमें फिर भी किंतु परंतु रहता है. और जो गुरुदेव अंदर से बताते हैं, माँ पुण्य स्थिति अंदर से बताती है, फिर किंतु परंतु नहीं रहता. ये आप करो, फिर आगे बढ़ते हैं. All right. So 2 things Bhamar Singh ji had mentioned, that after having this first session of Theory and Practice of Guru Siyag Yoga,
he had a word with Chayan Goswami, who is living in California, and he had actually done a documentary on science and spirituality of meditation. That was a widely shared, documentary all across the world. So Chayan was interacting with us. He had a Hindi session with us earlier as well. So Bamar Singh ji is referring to that conversation that after the English session, Chayan had called him and they had a long conversation. And what Bamar Singh ji says that this is, what is the the para world, paranormal world's phenomena. It's not a worldly phenomena. It's Sukshma Jagat, and what Chayan was expecting to hear, what he wanted to listen, and what he needed to listen, that was the only content, you know, delivered by Bhavar Singh ji. And he also mentioned, Chayan also mentioned about, 2 years ago, what experiences he had while practicing Guru Siyag yoga. And he narrated that, he had a lot of, head massage, automatic activities, as if, brain is being cleaned for something new or something divine, as we, clean the computer, you know. So similarly, his head exercises were conducted, and he narrated that to Bhamar Singh ji. He was also keen to know, what Gurudev had shown to Bhamar Singh ji about future, because Gurudev had mentioned that in this meditation you will be able to see the unlimited past and future, whatever has been said in the past. So that does not destroy, that word does not destroy. In this meditation, you are able to see the speaker, not only to see the speaker, but to hear as well. So Chayan was expecting or was eager to know from Bhamar Singh ji that, what Gurudev had shared or what Gurudev has shown to you about future. And Bhamar Singh ji's response was very simple, that there is no fun to listen to what I have been shown, unless it occurs within you. That is a real experience you will have. So I think I have covered. हाँ, Yes, sir. था क्या सर्वेंद्र जी, उसने जो पूछा जो बताया, तो मेरे को फिर मैंने गुरुदेव का ही कहा। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा मैं कल की हूँ या मैं अवतार हूँ, मतलब वो मैं हूँ। उन्होंने कभी कबीर का लिया, कभी किसी का, वो उसका पतंजलि का लिया, उसने ये कहा है, उसने ये कहा है। तो मैंने उसको दिया कि जब मेरे को जो एक मेरी जो अनुभूतियाँ हुई और मेरे फिर वो जो एक अज्ञा चक्र का जो काम शुरू हुआ और गुरुदेव ने कहा ये अज्ञा चक्र का काम है, तो उस टाइम गुरुदेव ने मेरे को पतंजलि योग दर्शन की किताब दी पढ़ने की। मैंने उसको हफ्ता दिस में पढ़ी। पढ़ने के बाद गुरुदेव के पास वापस ले गया और गुरुदेव से मैं हालांकि मेरे को पहले भी बताया था कि मेरे को बोलने का बहुत कम काम पड़ता, गुरुदेव किसी बहाने से मेरी बात का जवाब मिल जाता। पर उस दिन हम दो, उस टाइम लोग आए नहीं थे, हम भी थे। मैंने किताब दी और मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हाँ, मैं क्यों, ये किताब तो ठीक है पर मेरे हिसाब से कुछ इसमें और होना चाहिए था। बोले क्या? मैं क्या, इसके 4 पाद बनाए हैं, वो 3 पाद जो जिसे हम माया कहते हैं, जो गुरुदेव की भाषा में मूलाधार से विशुद्धि तक माया का जो है साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद, ये पाद तो हैं बड़े बड़े, बड़ा विस्तार से लिखा है। जबकि दुनियादारी के लोगों को उसकी जरूरत है, पर गुरुदेव के शिष्यों की इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव का काम तो अज्ञा चक्र से शुरू होता है। तो जो केवल्य पाद है वो विस्तार से लिखा जाना चाहिए था। अब आप एक बार कर दो, फिर अपने वापस करते हैं। Very nice. And Bhavan Singh ji said that whatever was asked by Chayan, whatever has been told to Chayan, and the crux of that was that Gurudev never said that he is Kalki, never emphasized on that, yet he had mentioned on a couple of occasions. But primarily he focused on
referring to Kabir, referring to Patanjali, Rishi Patanjali. And Bhavar Singh ji said that once, he went to meet Gurudev, he had some questions and he wanted to have answers. So without being asked, these questions were answered somehow. So during that time when Gurudev had mentioned that Bhavar Singh ji, your, the third eye work is in progress. So Bhavar Singh ji went to Gurudev, and Gurudev gave him a book, Patanjali Yog Darshan, to read. And Bhavar Singh ji read that book. And after a few days, he went back, returning that book. Then he had a question. And he said that, all these four chapters in Patanjali Yog Darshan, Samadhi, Sadhan Path, Samadhi Path, and Vibhuti Path, right? These are more or less related to the Maya or worldly things, more or less. And Bhavar Singh ji said that I think these have been explained in greater detail. Yet Gurudev Siyag's disciples don't need this because Gurudev's work starts from the third eye. All these chakras below third eye are the chakras of Maya. Yeah. So Bhavar Singh ji actually discussed with Gurudev that there should have been detailed uh, chapter on Kevalya path, how to attain the salvation or enlightenment. जी भंवर सिंह जी. तो सर धर्मेंद्र जी, मैंने गुरुदेव को कहा मैं कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आज तक हुआ है उसमें बहुत लिखा गया है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी है, माया के जगत की ज्ञान की लाइब्रेरियां भरी पड़ी है। पर जो गुरुदेव ने जो आप जी सब्जेक्ट चुना है कि प्रैक्टिकल, थ्योरी बाद में प्रैक्टिकल, तो गुरुदेव का जो प्रैक्टिकल आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की जो बात है, वो सब्जेक्ट उस केवल्य पाद में विस्तार से होना चाहिए था। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की जो यात्रा है, और गुरुदेव की असली यात्रा तो ये है, नीचे से तो वो मंत्र निकाल के लाता है, जो आप कहते हैं ना डिसेंड कर गया, वो डिसेंड इसलिए किया गया कि नीचे से नीचे आदमी को उठा के लाया, इसलिए किया। वो वहां से मंत्र से ही आता है ऊपर, वो मंत्र ही लाता है। असली चीज है यहां से शुरू होती है यात्रा। तो ये यात्रा शुरू होती है, तो इसका मेरा यही था कि इसके बारे में केवल्य पाद में विस्तार से लिखा होना चाहिए था और हर चीज को बारीकी से उसको बताना चाहिए था, पर उसकी जगह उसने संकेत में बोलते बोलते चैप्टर खत्म कर दिया। Okay. So let me translate that part of it. So he said that, all the literature available throughout the world in libraries and all is more to do with Maya, all these chakras below the third eye, and abundant literature has been written, shared. Yet, Gurudev's work has not been, highlighted that way, and Gurudev's theory is simple: that practice first and theory later. So practice confirms the theory. That's what Gurudev's, idea was. And Bhavar Singh ji had this notion or assertion or a kind of suggestion that Kevalya Path, the fourth chapter, should have been written in a greater detail because that chapter deals with from the third eye to the Sahasrar, the thousand lotus, place, chakra or crown chakra, we call it. So, however, the mantra given by Gurudev Siyag actually brings up the Kundalini from the Mooladhara, which is sort of in a basement or is in a very lower level of chakras. So that mantra brings that consciousness up, and the actual work starts from the third eye. जी सर. तो धर्मेंद्र जी, जो बात जो गुरुदेव से मैंने यही की कि इसका विस्तार, तो गुरुदेव ने जो आगे क्या कहते हैं, गुरुदेव मेरे कह रहे हैं बेटा ये गूंगे वाला गुड़ है, और रही बात जो तू कह रहा है, अगर पतंजलि ऋषि उस टाइम लिख भी देता सारी की सारी बात, तो
वो लोगों को 30वीं दुनिया का उपन्यास लगता, वो किसी के समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जो आपने हेडिंग रखा है कि पहले प्रैक्टिस फिर थ्योरी, तो जो साधक अज्ञात चक्र पे पहुंचेगा ही नहीं और अज्ञात चक्र से यात्रा ही शुरू नहीं होगी, उसके वो ज्ञान कैसे समझ में आ जाएगा? वो बैठा तो है माया जगत में, और परा जगत की आप बात करोगे तो जो गुरुदेव ने भाषा कहा है ना, ये बैखरी भाषा, ये प्रसंती भाषा, ये परावास, तो वो की वो बात होती है। गुरुदेव ने कहा समझता कौन बेटा? ये जो चीज है, पहली शर्त है यहाँ पहुंचना, और पहुंचने के बाद फिर उसको पता लगता है कि हाँ ये क्या चीज है। तो ये जो चीज गुरुदेव आज जो कराए जा रहे हैं दुनिया के लिए, उस दर्शन से बड़ा दर्शन है कि गुरुदेव अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा लोगों को माया से जगत से निकाल के और अज्ञात चक्र में प्रवेश करा रहे, अज्ञात चक्र में प्रवेश करा रहे। अज्ञात चक्र में प्रवेश कराने के बाद सब्जेक्ट आता है कि ये विस्तार क्या है, ये कैसे है। तो मैं आपको मेरी जो समझ है उसके हिसाब से बताऊंगा कि ठीक धर्मेंद्र जी, इसको गुरुदेव ने कहा है ना, ये विज्ञान और ये पराविज्ञान, ये दोनों एक दूसरे के विरोध नहीं है। हमारी जो यात्रा होती है वो ठीक जो जैसे आज ही का दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे चंद्रयान लैंड करने वाला है, चंद्रयान को छोड़ने से लेके आज तक उसका नियंत्रण इसरो से है, उसका जो सारा संचालन वहां से है। ठीक इसी प्रकार अपनी यात्रा है। मैं आगे बोलूंगा। All right. So a few more things have been said. I just, noted down as point wise. It helps me, greatly helps me not to miss any point which Bhavar Singh ji is mentioning. So his assertion was again, and his question was very innocent and humble to Gurudev that, Kevalya Path should have been written in greater detail. Then Gurudev said, it's like, something you can't even explain. This is a kind of bliss. This is a kind of Sachidanand, we call it, that you don't have words to explain about it. In Hindi, we call it gunge ka gud. Like, I'm not able to speak about that, yet I'm experiencing it. And then Gurudev also said that whatever you are saying, Bhavar Singh ji, that's, keeping it aside. Even if Rishi Patanjali must have written in greater detail, who would have understood this without having third eye opened? People would have considered this as, a kind of, what you call it, talismanic or sort of, illusionary novel, or some sort of, unimaginable stuff, kind of science fiction, okay, or fiction, I would say. So that's why Patanjali Rishi had not written to that. Unless we reach to the third eye, we can't even understand anything about what Patanjali Rishi had mentioned about the Kevalya path. And why so? Because we all are so much immersed or indulged in the Maya, in the worldly things, that all these chakras up to here are Maya's chakra. And unless this is opened, you can't understand it. So Gurudev had actually, with his mantra shakti, with his mantra power, he had been doing this effort to open the third eye for everyone. Okay? And I think I have covered couple of more things I have to cover. So Gurudev had explained to Bhavar Singh ji and mostly to everyone that science and spiritual science are not contrary to each other, yet these are complementary to each other, right? Like this, our spiritual journey is like, the Chandrayaan, which is Chandrayaan 3 nowadays. It has to land on moon.
on 23rd of August at 6:04 p.m. So that has been controlled by ISRO, sitting on the planet on Earth, and this has been controlled by ISRO, and this is almost like 340,000 kilometers away from the Earth, but it has been controlled. So similarly, our spiritual journey is like that. We have been controlled. Our ISRO is here, like the crown chakra, where the Lord, where the God is sitting, Gurudev is sitting. जी सर। धर्मेंद्र जी, मैं जो ये बातें सारी बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने कोई पढ़ी हुई बातें नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो प्रैक्टिकल हुई और उसको फिर आगे थ्योरी में कन्वर्ट किया। ये अपने विज्ञान और पराविज्ञान की बात करते हैं, तो जैसे ठीक इसी चंद्रयान 3 की तो उदाहरण लेते हैं, तो गुरुदेव ने, आपने एक बार स्पीच पढ़ी थी, गुरुदेव ने कहा है कि वो माँ कुंडलिनी शक्ति ऊपर कैसे बढ़ेगी, तो अपान वायु बंद लगता है। जैसे आपके मूल बंद लगता है तो अपान वायु रुक जाती है, और फिर वो जो कुंडलिनी शक्ति को पुश करती है तो वो आगे बढ़ती है। कहने का मतलब पावर लगती है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव ने यही कहा है कि जब रॉकेट उड़ता है तो उसको बड़ा ईंधन लगता है, वो झटका लगता है तो ऊपर जाता है। ये दोनों चीजें टैली होती है। जैसे चंद्रयान जाता है वैसे के वैसे कुंडलिनी को पुश, नीचे से वो झटका लगता है। अब शुरुआत, जैसे ये चंद्रयान उड़ान भरता है, फिर वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, फिर उसको 2 दिन नीचे, फिर 2 दिन ऊपर, फिर 3। इसी तरह माँ कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर आज्ञा इन चक्रों में बढ़ेगी, जैसे जैसे पहले पहले उसको ज्यादा पावर लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको ऊपर बढ़ाने, और उसके लिए वो वही गुरुदेव ने कहा है कि वो रोग ठीक करती जाएगी। मतलब उसके लिए वातावरण तैयार होता जाएगा। एक दिन में ही सब कुछ नहीं हो जाए, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वो बढ़ती है। चंद्रयान भी एक दिन में नहीं चला गया, 2 दिन नीचे चक्कर लगाया, फिर 3 दिन ऊपर चक्कर लगाया, फिर उसके ऊपर चक्कर लगाया। ठीक ये दोनों चीजें टैली होती। जैसे चंद्रयान अपने उस गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं निकल जाता है पृथ्वी के, तब तक वो ईंधन से चलता है। इसी प्रकार जब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र तक नहीं आ जाती है, वो ही उसमें ईंधन लगता है। क्योंकि ये जो आपने कहा ना डिसेंट कर गया, वो मंत्र नीचे से उसको ला रहा है। मंत्र वो गुरुदेव से, जैसे उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, अंदर से, इसको एनर्जी मिलती है गुरुदेव से। वो गुरुदेव से कनेक्ट रहेगा और उसकी वो चीज ऊपर बढ़ती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी। जैसे कई बार इसी इसरो से पहले कई जो परीक्षण हुए थे, वो रॉकेट मिनट 2 मिनट उड़े या 10 मिनट उड़े या 2 दिन उड़े, वो नष्ट हो गए। इसी प्रकार अपने यहाँ भी कई साधक आते हैं, अगर वो गुरु से कनेक्ट नहीं रहते हैं तो वो विमान नष्ट हो जाते हैं। ये दोनों चीजें टैली होती है। अब कहने का यह है कि जैसे पृथ्वी के जब तक वो नजदीक रहेगा उसको सारे कुछ दिखता रहेगा। अपने भी कई बार देखा है कि वो आगे तो छोटा सा बिंदु सा होता है, पीछे लकीर होती है बड़ी, तो देखते हैं भी कोई रॉकेट जा रहा है। जब तक वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में है, वो पृथ्वी के सीन दिखते जाएंगे। इसी तरह अपने गुरुदेव वाले में भी वो जैसे मूलाधार में है, उसको खुशबू आएगी पृथ्वी तत्व की, उसको बड़े वो अच्छा लगेगा, हाँ यार जोरदार चीज है। जैसे ही वो ऊपर बढ़ेगा, नाभि में आएगा, उससे ऊपर वो पहले दूसरे सुविधार्थ में आएगा, तो जैसे अग्नि का आएगा तो उसको रूप दिखेंगे, कोई देवता दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, झरने दिखेंगे, तो वो बड़ा राजी होगा, यार मेरे को ये दिखा, मेरे को ये दिखा। उसको पता नहीं है तो शुरुआत दिनों में वो बड़ा खुश होता है। उसके बाद जैसे ही कईयों को खेसरी लगती है, वो मणिपुर में आएगा, जल तत्व में आएगा, और उसको स्वाद आएंगे, खेसरी लगेगी, तो वो देखेगा मैं तो अलग ही योगी बन गया। और ये उस रास्ते के निशान है, जैसे उस रॉकेट के निशान है वैसे ही इसमें भी निशान है। अब यूं करता करता वो योगी आगे जैसे उसकी यात्रा बढ़ती है, जैसे ही वो हार्ट चक्कर पे आता है तो अनलिमिटेड ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसको ऐसे ही दिमाग में ही कोई शब्द आया और उसके अंदर डिक्शनरी खुल जाएगी
इस शब्द का ये प्रत्यय, इस शब्द का ये प्रत्यय, इस शब्द का ये प्रत्यय, एक स्टेज आती है साधकों में, और इसका पतंजलि में साफ लिखा है। ये सारा चलता है। अब आज मेरा लंबा हो जाएगा, फिर आप कर दो, फिर आप करेंगे। Okay. So very interesting aspects Bhavar Singh ji had mentioned. And he is humble in saying that he is not going to explain any theory. He is only telling the practical experiences he had himself. And he is quoting again the Chandrayaan 3 example. And similarly, when Kundalini, which was residing in the basement or dormant position in sacrum, and once it is awakened, then there are 5 type of airs, the in the body system. So one air is called apan vayu, which is actually responsible for discharging all the things below the belly button, like the toilet and urine and delivery and all. So once that apan vayu takes a U-turn and it pushes kundalini upward, then only it goes up. Similarly, like any rocket which has been sent, which when it takes off, it has a spark and it has a force or short. So there is a similarity between kundalini movement, upward movement of kundalini, and as well as the chandrayaan and all. So once Kundalini moves up, initially much more force is required because it is quite close to the environment, and it creates an environment for the spiritual growth. And initially, since it is close to the earth element, the Muladhara, so that's why it will need more force. Okay. Similarly, like Chandrayaan did not reach to moon in a single day, so you can't even expect that you will be enlightened in a single day or so. There's a gradual movement of Kundalini. First, it creates the environment, and it takes more rounds, unless it gets out of the orbit of or the gravitational force of Earth. We can continue to see a lot of things. Okay. And the thing Gurudev had said that whichever force, whichever energy, or whichever god you want to see has actually descended, that power has descended in you. So though you are ascending, yet he will meet. So coming back to the point, and Bhamar Singh ji had explained that unless we are connected here, connected to the god, we see a lot of people, a lot of experienced people, get connected for a couple of days and then they go away. Similarly, not all Chandrayaan experiences are successful. Some are, blasted in a couple of days. Some are blasted while taking off, and that's gone. So that rocket is destroyed that way. So similarly, we are also practitioners that not everyone will be connected to Guru, which is within, right? And there is another metaphor Bhavar Singh ji had used, saying that, when we are closer to the gravitational force, when the rocket is closer to the gravitational force of Earth, we see all these scenario, right? We can sort of, bird's eye view, we'll see mountains, rivers, green land, whatever. Similarly, when we are into our initial spiritual journey, when the Kundalini is awakened and it is moving up, before it reaches to the heart chakra, we continue to experience a lot of unique things, like the divine smell, the divine taste, and we will see a lot of deities. We will see a lot of beautiful places, and we assume that, oh, we are going great. Yet we need to understand that it's the beginning only. That's the only beginning. Some people will experience having khechari mudra.
Khechra is a rare mudra, and people start believing that, oh, they have become yogi. It's not that. These are only the landmarks, these are only the milestones, so to speak, in our spiritual journey. And when this Kundalini reaches to the heart chakra, then the knowledge appears from within. That is the internal knowledge which appears from within. And even if you look at a word, then the entire dictionary of words or explanation will occur from within. जी सर. तो धर्मेश जी, होता क्या है कि जैसे जैसे इन चक्रों पे साधक आगे बढ़ता है तो इसके बीच में फिर माया जगत में जिसे सिद्धियों का नाम दिया गया है, वो सिद्धियां भी बीच बीच में, उसका भी पतंजलि में मेंशन है, वो सिद्धियां भी बीच बीच में आती रहती है। तो जो पुराने टाइम में अगर सुना गया है तो उसके पास ये सिद्धि थी, इसके पास ये सिद्धि थी, किसी के पास एक एक सिद्धि होती थी, वो भी उसको लेके बैठ जाता और बड़ा नाम होता था। इस गुरुदेव वाले साधना में वो सिद्धियां आती जरूर है, पर आप उसमें अटक नहीं सकते। अगर आप अटक गए तो वो आपको अंदर से मैसेज मिलेगा, नहीं आगे बढ़ो। और अगर साधक आगे नहीं बढ़ता है, उसमें ही बैठे रहने की कोशिश करता है, तो फिर उसमें दूसरा प्रावधान होता है कि उसको अंदर मां खुलने शक्ति जबरदस्ती आगे बढ़ाती, यहां तक कि भी उसके जैसे डंडा मारना पड़े तो भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ाती। क्योंकि ये सब्जेक्ट रुकने का नहीं है, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का। जो भी सीढ़ियां आए उसको देखो, ये सिर्फ मेंशन है कि इस रास्ते में ये चीजें होती है, पर तुम्हें यहाँ नहीं रुकना है। तुम्हारा टारगेट तो सहस्रार में गुरुदेव के पास पहुंचना है। लोग इन चक्रों में सीढ़ियां आती जरूर है, पर उनका न तो आपको उपयोग करना है न रुकना है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी यात्रा जो है वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओ। इसीलिए साधक को जो मां कुंडली शक्ति आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है, उसके मैसेज के अनुसार आगे बढ़ता चाहिए, आगे बढ़ता चाहिए। Okay. So again, very meaningful thing which we may experience during this process. From the heart chakra, when Kundalini reaches to the heart chakra, we may start experiencing some sort of enlightenments or siddhis, we call it, like special ability or special power which is beyond the five senses. Yet we might have heard that olden times this fellow had that great spiritual power, and he had this knowledge where he could just close his eyes and see what's going on. So that's a kind of special ability which is beyond five senses. Now in Guru Siyag yoga, you don't need to get stuck to these siddhis, because you will experience all these siddhis. But the message from the Guru in this that is just one of the milestones. Go ahead, move ahead. And if you don't move, because Siddhi is like again, a part of Maya, and if you don't move forward, then Kundalini will automatically push you to move forward, because your destination is not this. You don't need to stop here. You don't need to get indulged or use these siddhis for your own benefits and stop here. Your purpose is to reach to the crown chakra where Gurudev is there. So that's the crux of the thing. That target is to reach to crown chakra or sahasrar, lotus, thousand lotus chakra, and don't kind of distracted with these siddhis. You will experience all these siddhis. Yes, sir. इसमें रमेश जी फिर आगे क्या आता है कि जैसे अपने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं कि हठ योग और ये जो गुरुदेव वाला जो सहज योग में, इसमें अंतर क्या है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, तो जैसे 10 आदमी बैठे हैं, चाहे 100 आदमी बैठे हैं, चाहे 1000 आदमी बैठे हैं, चाहे लाख आदमी बैठे हैं, उनकी यात्रा का स्तर अलग अलग होगा। ये नहीं है कि साथ बैठे हैं जब कर रहे हैं तो एक सही नहीं, अलग अलग साधकों का अपने कर्म फलों के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर दोनों काम होते हैं। जैसे जैसे वो मंत्र जपता है,
और वो माँ कुंडली आगे बढ़ती है, तो हमारे जो पिछले जन्मों के, जैसे गुरुदेव ने कहा है 7 जन्म के डेटा, पतंजलि ऋषि ने कहा कि 7 जन्म के डेटा तुम्हारे साथ रहते हैं। तो जैसे उनको कर्म फल कहते हैं, जैसे आपने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं या किसी ने छोटे लोन ले रखे हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे उन लोन की भरती पड़ेगी। वो लोन किससे जमा होंगे? जैसे रिजर्व बैंक के अंदर नोट छपते हैं तो उनके अगेंस्ट सोना रखा जाता है। तो ये गुरुदेव वाला मंत्र सोना है। आप जितना मंत्र जाप करोगे, जितना मंत्र जाप करोगे, आपके पिछले जन्मों में जो कर्जा है वो उतरता जाएगा, उतरता जाएगा, और साधक आगे बढ़ता जाएगा। अब किसी ने बड़ा लोन ले रखा है, उसकी किस्तें लंबी होगी। किसी ने छोटा लोन ले रखा है, उसकी किस्तें छोटी और कम होगी। इसी हिसाब से हम सारे दीक्षा लेते हैं, गुरुदेव से जुड़ते भी हैं, आराधना करते हैं, पर हर साधक को टाइम अलग अलग लगता है। दूसरा, जो दूसरे की बात छोड़ो, मैं मेरा ही उदाहरण देता हूं कि ये सहज यात्रा कितनी, लोग सोचते हैं ना ऐसा हो जाएगा। मेरा पहले जो टाइम लगा 86 से 90 तक तो और बात है, पर जो 1 जनवरी 90 को जो मेरे साथ हुआ, मैंने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव को मैंने पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे वो जो यहाँ से थे उनका, गुरुदेव ने कहा आज्ञा चक्र का काम शुरू हो गया। तो धर्मेंद्र जी, कहने की बात है 90 को आज कितने साल हो? 90 में जब गुरुदेव ने कहा तेरा आज्ञा चक्र का काम शुरू हो गया, और आज 23 आ गया, 33 साल हो गए। उसके बाद वैसा ही भंवर सिंह है, कोई भंवर सिंह के सींग पूंछ नहीं हो गया है, वैसा ही भंवर सिंह है जैसे पहले था। इसमें सारा बदलाव इंटरनल आता है, सारा चेंज अंदर से आता है। आज जो दूसरों का नहीं, मैं मेरा ही कहता हूं कि धर्मेंद्र जी चाहे मेरे बाद में आए, अभी 2 साल ही हमें काम करते हुए हैं, पर जो भंवर सिंह 28 साल जिसको मतलब 23 साल जो लग गए, और धर्मेंद्र जी को तो 1 साल ही नहीं लगा। 2 साल में ही आज भंवर सिंह पीछे चल रहा है, धर्मेंद्र जी आगे चल रहा है। ये वो काम है कि धर्मेंद्र जी ने लोन कम ले रखा था, भंवर सिंह ने लोन ज्यादा ले रखा था। मैं दूसरों का उदाहरण नहीं, अपना ही लेता हूं। तो ये यात्रा धैर्य पूर्वक चलते जाओ, चलते जाओ, करते जाओ, और गुरुदेव के चरणों में बैठो, तभी पार पड़ती है। साल 2 साल से 5 साल से उछलने से कुछ नहीं होता है। आगे बोलो, आप करो, फिर बात करते हैं। Okay. So, a few more things Bhavan Singh ji had said, that there is a difference, as he had also mentioned last time, there is a difference between Hatha Yoga and this yoga. Okay. Now, every disciple has the karmic cycle or the karmic baggage. We call it karm phal. So, no matter 10 people are sitting or 10 million people are sitting, not everyone will be on the same level as far as the spiritual journey is concerned. And wherever we are, it all depends basis our baggage, karmic baggage we are carrying. The more we chant the mantra, and as Patanjali Rishi had said, that one soul carries the data of 7 births a person has taken. So we are, in a way, carrying the baggage of karma of past 7 births that way. Okay. It's similarly like, we have taken a bigger loan or a smaller loan, and we have to repay that. In India, like Reserve Bank of India prints the currency notes with the deposit of gold. It's a sort of gold bond or whatever you call it. In the same fashion, in the same manner, your Gurudev's divine mantra is a gold you are carrying. More you earn this gold, more debt you can, settle, the karmic debt. Okay. Then, if you have more debt, you have to chant more. If you have lesser debt, karmic debt, then even with
little mantra chanting, things will settle and your accounts will be clear. And that's why every disciple takes different time to reach to that level. Okay. And Bhamar Singh ji gave his own example that, there are two broader categories of his spiritual experiences. Chrono, chronically, Chronologically, 1986 to 1990 was one category where he had experienced something. And from 1990 or 1991, when Gurudev had told him that, your third eye work is being initiated. Now, Bhamar Singh ji is saying that today is 2023. After spending whole good 33 years, there is no change from outside in Bhamar Singh. He is the same Bhamar Singh. He did not develop any horn or any special ability which is visible to everyone. It is the change which happens internally. And all that change which is happening internally, it may or may not be visible externally. And he is giving an example comparing. There is no comparison yet, but for the sake of explanation, that who had the bigger karmic debt. Like, I'm a new disciple, Dharmender is a new disciple, and Bhamar Singh ji is on the third eye for last 33 years, and I'm a new disciple, merely 6-year-old in this practice, and for last couple of years I have been working with Bhamar Singh ji. And Bhamar Singh ji says that, Dharmender had, further up than me in lesser time compared to my 33 years which I have spent. So the point is, have patience. Have patience and keep on chanting the mantra. Yes, sir. तो ये जो चीजें बता रहा था रमन जी कि ये जो चीजें हैं, जो यात्रा है हमारी, ये जो सारा इसका नियंत्रण मां कुंडली शक्ति के है, और साधक बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वो ही फिर जगत का आता है कि माया जगत और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। जैसे हमारी यात्रा अंदर से बढ़ के विशुद्धि तक आती है, जो मूलाधार से विशुद्धि की बात कही है गुरुदेव ने कि ये माया का जगत है, इसके अंदर जन्मना और मरना, जन्मना और मरना। ठीक इसी प्रकार रॉकेट भी जब तक वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में है, वो ईंधन से चलता रहेगा और वैज्ञानिक उस पर वाच रखेंगे, देखते रहेंगे। हाँ, अब यहाँ क्या टेस्टिंग इनके क्या है, अंदर का सारा जो मैं तब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इस आजकल यूट्यूब आता रहता है उनके वो अलग अलग टुकड़ों में, तो वो सारा का सारा ये नहीं है कि रॉकेट उड़ा के छोड़ दिया। हजारों आदमी बैठे हैं, उनको मैसेज देने वाले, डाटा देने वाले, एक छोटी से छोटी बात का सारा कुछ। इसी प्रकार वो उसमें पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने से पहले उसकी सारी जांच होती है। वो संतुष्ट होते हैं कि अब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, वो सारा का सारा जांच होता है। इसी प्रकार हमारी मां कुंडली शक्ति भी जब साधक की वो कुंडली या विशुद्धि में आ जाएगी, तो उसकी सारी जांच होगी कि इसके अंदर सिर्फ रामलाल ही है, ये मंत्री है, और इसके अंदर कोई नहीं है। जो देवी शक्ति मूलाधार से लेके कहीं बंदा अटका हुआ था, वो सारा चेक होता है। जैसे फार्म चेक होते हैं ना, वो सारा फार्म चेक होते हैं, हजारों फार्म जो होते हैं, यस नो यस नो। इसी प्रकार उसकी जांच होती है, और उसके अंदर सब में अगर वही कल्कि का मंत्र पाया जाता है, तो एक पॉइंट भी ये नहीं हो, अगर एक भी हो गया तो कह देंगे नहीं भाई, दोबारा जा, फिर आना। इसी प्रकार विशुद्धि में वो जांच होती है। और पातंजलि योग की दर्शन के हिसाब से वो ये है कि यहाँ आपका ये जन्मना मरना क्यों था। गुरुदेव ने कहा है ना, मैं तो आया हूं भाई, न रोग ठीक करना आया हूं, न बीमारियां ठीक करना आया हूं, न कोई तामसिकता मिटाना आया हूं। मेरा काम तो सबसे बड़ा है जन्मना मरना मिटाना। जन्मना मरना मिटाने के लिए वो होता है कि जैसे यहाँ के बाद कर्म तो नहीं लिखा जाएंगे, पर वो टेस्टिंग होंगे कि तुम्हारे अंदर कोई बीज नहीं रह जाए, किसी प्रकार का कि बारिश हुई फिर लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे गुरुदेव से देने के बाद मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा,
और उसके अंदर एक जो आता है कि जब वो जल प्रलय हुई थी, उससे पहले नूह नाम का एक कोई नबी था, उसको कहा गया कि तू इतना बड़ा जहाज बना जंगल में, जमीन पे इतना बड़ा कि उससे बड़ा कोई नहीं, और एक छोटा सा आड़ा रख दे उसमें। और उसने नूह ने क्या किया, वो जैसे उसको कहा गया किया, और उसने कहा हर जाति का एक बीज ला के रख दे, हर जाति का जोड़ा ला के रख दे, संसार में जो भी है सबका एक जोड़ा ला के रख दे। उसने कर दिया ऐसा, वो एक तरह का बीज सुरक्षित किया गया था। उसके बाद ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई कि पूरी पृथ्वी जल से मगन हो गई, और वो लकड़ी का जहाज जो जंगल में बनाया था वो तैरने लग गया। पृथ्वी कहीं दिखे ही नहीं, पृथ्वी कहीं दिखे ही नहीं। ऐसे साल पूरा याद नहीं है, पर सालों महीने बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि कोई उसको थोड़ा पृथ्वी का किनारा लगा जहां उसका जहाज लगा, फिर उसने जहाज को लंगर डाल के वहां खड़ा किया, और जो उसके वो एक दरवाजे पर रखा हुआ था, एक जंगला नुमा रोशनदान नुमा, उससे कौवे को भेजा, देख क्या भाई कहीं जगह है क्या। तो वो देख के आया, फिर ये लंगर डाला, और फिर धीरे धीरे पानी घटने लगा, घटने लगा, और फिर वो जोड़े इस पृथ्वी पर उतारे गए। आगे फिर बात करेंगे। Okay. So Bamar Singh ji is referring to some of the stories from the Bible. And he begins his conversation again on this topic that Kundalini has all the control. And with that control, continuously, practitioner keeps on moving. As we talked about the metaphor of Chandrayaan or the rocket, that unless it crosses the Earth gravitational, it continues to be in control by this. So up to Vishuddhi Chakra, the word is Maya. This world of Maya prevails and controls. And unless the rocket crosses that gravitational force or the earth element, all these scientists keep a watch on the rocket. Similarly, all this happens. Now there is a coordination between thousands and thousands of scientists which are actually sending data to this rocket and receiving data, images and all. So before coming back to the Vishuddhi Chakra, this up to here is all the the world of Maya, where all deities and all other prevails. So this is a sort of final checkpoint. Okay. And Rishi Patanjali had also mentioned about it. Okay. At this point, Kundalini checks whether this practitioner has only Ramlal Siyag or any other else is still there, or he has the only mantra given by Guru, or there is any other mantra he is chanting. And if there is a gap, there is a lapse, there is a, during the checklist, if it is not a perfect case, then again, it remains up to Vishuddhi Chakra or even can go below to that. Okay. So the point here is the Vishuddhi is the final stage. And why Gurudev's ask people to start, meditating him on the third eye, the reason Gurudev mentions that I'm not here to cure your physical diseases. I'm here to help you get rid of this biggest disease of birth and death, birth and death, birth and death. And Gurudev promises that you will reach to a state which is called terrestrial immortality, Parthiv Amratva. So that you can attain, and that is the purpose of Guru. Salvation is the purpose of Guru while we are in a physical body. Okay? And then Bhamar Singh Ji says that, he was given an Old Testament book by Gurudev, and he read one that, there was the entire earth was
full of water. There was no earth sign or soil or land visible. Before that, Nabi had asked Noor to prepare a big ship, a big ship with a small, window. And he told that, keep pair of seeds, keep a pair of seeds protected in this ship. And what happened later on, that the entire land mass was covered by water. No land mass was visible, and this ship was actually moving. And with a small window, this, a crow was sent to check whether there is a land mass or not, so that they can actually park or put a langar there. And then that is where, they find a small land mass or, piece of land, and then they parked the ship there. Yes, sir. तो जैसे ओल्ड टाइप में कहा गया नूह का कि वो जो है जल प्रलय हुई थी, उस पूरी पृथ्वी में कोई बीज नष्ट कर दिए गए थे, कोई बीज नहीं बचा था। वो बीज बचाए गए थे उसकी जहाज में, हर तरह की चीज। और जैसे ही उसने नगर डाला, जैसे जैसे पृथ्वी निकलती गई और वो से अंदर से निकाल के वो सारी चीजें पृथ्वी पे फैलाता गया, और पृथ्वी की एक नई रचना हो गई। क्योंकि बीज उसके पास था, इसलिए वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई और वो रचना हो गई। इसके अंदर ठीक उल्टा है। इसके अंदर विशुद्धि चक्र के अंदर वो सारा फाइल तभी होगी कि वो सारे यहाँ पातंजलि के हिसाब से हमारे जो भी बीज हैं, पूर्व संस्कारों के बीज जला दिए जाते हैं। उनको बीजों को भून दिया जाता है, जिससे वो आगे उग ही नहीं सके, उसमें कुछ भी नहीं रहे, वो सारे बीज जला दिए जाते हैं। और एक ही बीज रहता है, सिर्फ एक ही बीज, वो गुरुदेव का मंत्र। जब वो फाइल उसकी चेक होती है, उसमें एक ही मंत्र रहता है, वो गुरुदेव का मंत्र रहता है, बाकी सारे जला दिए जाते हैं। उसके बाद वो साधक उससे बंधन मुक्त हो जाता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें बीज रहेगा ही नहीं। तो फिर वो आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है, और फिर उसका काम, असली काम शुरू होता है। गुरुदेव का काम जो है, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की उसकी यात्रा शुरू होती है। ठीक इसी प्रकार रॉकेट को भी जब वो टेस्ट करके सही पाया जाता है कि हाँ ये फिट है, इसके सौर पैनल खोले जा सकते हैं, इसका ईंधन बंद किया जा सकता है, तो जैसे हम यहाँ आज्ञा चक्र पे आते हैं, उसी प्रकार वो साधक भी, रॉकेट भी, उसको ईंधन बंद कर दिया जाता है और सौर पैनल खोल दिए जाते हैं। आगे की जो यात्रा उसकी होती है, वो सौर पैनल से होती है। इसी प्रकार हमारे साधक के अंदर भी ये विज्ञान दोनों मेल करते हैं कि जब आज्ञा चक्र में वो आ जाता है, उसके बाद उसका कर्ता भाव खत्म हो जाता है, उसका दृष्टा भाव रहता है, सिर्फ अनुभव रहता है। दृष्टा भाव से वो आगे बढ़ता जाता है। यही वो चीज है जो गुरुदेव असली काम जो शुरू करवाया है, जो हमने केवल्य बात की थी, जो गूंगेवाड़ी गुड़ की बात की थी, वो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। Okay, so I think we are concluding this. Bhavar Singh ji says that, whatever story he had narrated, and the end result of that story was that, since the seeds were available in the ship, and these were again sowed, and a new world was created basis that. Guru Siyag Yoga is actually opposite to that. It, at the Vishuddhi, is a kind of, furnace or fire, kind of arrangement is made, and all the karmic seeds are burnt. Only one seed is left, and that is the seed mantra or beej mantra given by Gurudev Siyag. Similarly, when we reach to the third eye, then the work of third eye to crown chakra begins. Like this work begins. In a similar fashion, in a metaphorical way, however, there is a similarity or there is a similar chemistry between science and spiritual science.
when rocket reaches to the destination, and then scientists decide whether to stop the fuel and open the solar panels, or continue using that fuel energy or power. So similarly, when we reach to the third eye, then we become an observer. We are no more a practitioner, no more a kind of doer, but we are an observer. We are not into karta bhav, but we are into observer mode. So once we are completely observer, then there is no karmic seed left to us. And the experience we have is what is said that, though you have experience, but you can't explain what it is. So I think that's where we can conclude today's, you know, more of a practical and theoretical ground both. जी सर. अब धर्मेंद्र जी दोनों चीजें जो ये अपने यहाँ लाए हैं, तो वही इसी हिसाब से वो सूर्य की रोशनी से उस सौर पैनल वो चलते जाएगा और उसकी यात्रा बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार हमारा साधक भी वो सहस्त्रार में बैठे सत्ता से जुड़ा रहेगा, उसकी यात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब होता क्या है कि जैसे जैसे अज्ञा चक्र से ऊपर यात्रा शुरू होगी, वो साधक उसमें पहले वाली चीजें बिल्कुल नहीं हो जाएगी, वो बिल्कुल मौन हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, वो अनुभव करेगा। जैसे इसरो में बैठे हुए अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हाँ रॉकेट जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, इसी प्रकार साधक भी अपने गुरु के चरणों में वो आंखें चाहे उसकी खुली है और चाहे बंद है, वो साधक आप उसको पास में आके कोई कहेगा अरे क्या कर रहा है धर्मेंद्र, तब कहेगा हाँ, नहीं तो वो देखता है इसने मेरे को देखा और बोला ही नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र की आंखें खुली है पर धर्मेंद्र बाहर देख ही नहीं रहा है, अंदर देख रहा है। ये बदलाव उसमें आता है, ये लक्षण उसमें आते हैं कि उधर से वो जो ये एरिया है ना, इसके अंदर मैं अभी एकदम वैसे तो नहीं, मैं इशारे में बताता हूँ, इस एरिया में काम चलता है, यहाँ से लेकर इस एरिया में काम चलता है। तो कभी कोई कहेगा सुई चुभती है, कभी कोई कहेगा कुरेद रहा है, और कई बार बीच में महीना 2 महीना कुछ होगा भी तो देखेगा यार मैं चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, ये भी वहम होता है। जैसे ही आपके आएगा वो गुरु शक्ति समझ जाएगी कुछ, तो वो थोड़ा सा चॉकलेट देती है, आपके अंदर ऐसा होएगा हाँ यार वहाँ हो रहा है, और ऐसा नशा आ जाएगा, ऐसा नशा आ जाएगा कि आप सारी चीजें भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओ, क्योंकि ये सच्चिदानंद का घर है, सच्चिदानंद का। तो आगे की जो यात्रा है वो सूक्ष्म जगत की यात्रा है, असली गुरुदेव की यात्रा अज्ञा चक्र से ही शुरू होती है, अज्ञा चक्र से ही शुरू होती है। मैं अब क्या टाइम हो रहा है, तो मैं अगली बात तो आगे करेंगे। मैं जो बात जिस बात के लिए कही गई वो बात ये कह रहा हूं कि चैन और मेरी जो बात, और मेरे से जो चैन को पतंजलि ऋषि का जो कहलवाया गया, आप ताजुब करोगे धर्मेंद्र जी, व्यवस्था गुरुदेव की कितनी जोरदार है। चैन को 2 साल पहले ये कहा गया था कि पतंजलि ऋषि को दोबारा लिखना पड़ेगा। जो 30 साल पहले भंवर सिंह को क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन गुरुदेव के पास पहुंचे हुए हैं। गुरुदेव ने उन क्वेश्चनों के हिसाब से कहा कि अब जो मेरी ये चीज चलेगी तो मेरे साधकों को केवल्यपाद की ज्यादा जरूरत होगी, उसमें संशोधन होना चाहिए। तो वो संशोधन गुरुदेव ही कराएंगे, गुरुदेव का कोई शिष्य कराएगा। वो काम चैन को सौंपा गया है कि इसकी जो है, तो ये है गुरुदेव की व्यवस्था, ये है गुरुदेव का प्रेम, कहाँ से किसको जोड़ते हैं, कहाँ से क्या कहलवाते हैं। और लोग कहते हैं कि ये धर्मेंद्र और भंवर सिंह कौन सा दर्शन कर रहे हैं। अरे भाई दर्शन तो गुरुदेव का है, सारे दर्शन उनके हैं, किससे क्या करवाना है वो गुरुदेव जाने, वो गुरुदेव जाने, वो गुरुदेव जाने। चैन को मैंने यही कहा, अभी तेरे को ये कहा है ना पतंजलि तो लिखना ही लिखना है, पर तेरे को जो ये है, जो इस काम हो रहा है, तू देख रहा है, धर्मेंद्र से टच में रहे। और ये जो शक्ति है गुरुदेव की, जो शक्ति है उस जमीन पे जहां तुम रह रहे हो, वहां की जो समस्याएं हैं उनमें ये कैसे सहयोगी हो सकती है, वैज्ञानिक ढंग से, थोपी हुई नहीं, वैज्ञानिक ढंग से। जैसे जो
दवाई बनती है, चाहे पश्चिम में लो और चाहे हिंदुस्तान में लो, उसके लक्षण वही होते हैं। इसी प्रकार ये गुरुदेव की जो मंत्र वाली दवाई है, ये पश्चिम जगत में कैसे काम करती है, उसको चयन को मैंने कहा भाई तू देख और तेरे को ये करना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इसको वाणी को विराम करना चाहता हूँ। आगे फिर बात करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। Jai Guru. So let me explain the last part of it, which is even more interesting. And we started talking about, and we kept on using the metaphor of Chandrayaan or solar, the rocket stuff. Once the solar panels are open, so the solar panels are fed by the sun. Sun is the source of energy, and it automatically captures all that energy from sun. So similarly, when practitioner reaches to a destination, then he will become more introvert, not extrovert, but he will become more introvert. Like ISRO scientists are just observing what's happening. So he practitioner will be in the lotus feet of Gurudev all the time, and unless somebody shakes him, then only he would be awakened. Oh, that's how. And this transformation happened when the work of crown chakra area starts. So people may experience a lot of things like, somebody is pricking that, some other sensation is happening, and all that. Sometimes nothing happens, and sometimes Gurudev offers some sort of, spiritual experience, which is like a chocolate to you, as this place is the home of Sachidananda. Sat plus Chit plus Anand, bliss becoming and being. That's we call Sachidanand, and Krishna has been named as Sachidanand. And then, while concluding his conversation with Chayan, and concluding conversation here as well, Bhavar Singh Ji mentioned that his notion or his question to Gurudev was that, Kevalya path should be elaborated further, because that is to do with our disciples of Guru Siyag. So Chayan had been assigned in a way to work on that path, and Rishi Patanjali may have to write or elaborate it further. Okay? And Kevalyapad needs to be further elaborated or amended. And this work has been, assigned to Chayan by Gurudev. And this is a bliss, sheer bliss, and a love of Gurudev Siyag to his true disciple. And only Gurudev knows who is the right person for doing what. Some people may, believe that we don't know the philosophy. Some people believe that we know philosophy. But whosoever have been assigned in this mission, the work in this mission, will be doing that work only. No one else can do that. Okay. And Bhavar Singh had suggestion to Chayan that assess what's what's more suitable on that part of the land, the western world. And if one medicine is prepared, for example, or remedy is prepared for that matter, it should not only solve the problem of east, it should only similarly solve the problem of west. And how that will be solved, that is what he has to do as a homework. And then Bhavar Singh ji had concluded his conversation there. So thank you so much, Bhavar Singh ji. बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की हैं. And there's always a risk covering or literally interpreting that, because not everything can be captured in the similar fashion. So now we will focus on the slides of Gurudev's speech, which we have actually, shared last time also. So moving ahead with the slide number 8, and I'm just simply reading it out before we play the mantra for you. And this meditation is primarily based on two things. Keep on chanting the mantra mentally, given by Gurudev Siyag. It's a 3-word mantra, and we'll play that mantra towards the end of this session. And second thing is, sit for meditation for twice a day. So just reading this part of speech
which Gurudev had delivered. It's a sort of translated version, not exactly, it may or may not capture the true meaning of it. Yet, we humbly requested Gurudev to help us. So Gurudev says that these religious preachers says that if disciple does not do the practice of the first three yugas, then God can't be found. Can the man of Kali Yuga do it now? So God will not be found. Where is he sitting? Where will you find him? He is a resident in your heart. He is inside you. Where will he go hiding? He doesn't have any space to escape. There is no scope. But you don't know the process to search for him within. The idols you worship outside are models. All those powers are inside you, alive. In a state of meditation and samadhi, these will be visible to you in 6 dimensions. So I'll tell you one mantra. See, in Kali Yuga, or the Yuga, the age of falsehood, only mantra chanting solves all the problem. Goswami Tulsidas ji has said in Kali Yuga, one mantra chanting will help you get rid of cycle of birth and death. So in this age, simply chanting the name of God brings an end to all problems, irrespective of your caste, any sect, any religion. It doesn't matter. This change has to come in this physical body, be it Hindu, Muslim, Jain, Buddhist. It includes all human beings. I have many Christian disciples because this is a universal change in human system, and this is not a religion created by humans. So you must chant the Diksha mantra mentally, and whatever other worships you are performing or doing, keep on doing it. But whatever mantra I tell you, keep on chanting it mentally all the time. All change will come from that. Neither to do anything or with the effort of intellect, nor to leave it. One name has to be chanted with the effort of intellect. Now, the worship of chanting the name. I told you earlier that our religion is very, very scientific. All religions believe that the world originated from the word. It was said in the Gita, isn't it? That all this has been made from Om Tat Sat. Jewish philosophy, Christian philosophy, Muslim philosophy also believes originated from the word. But the direct experience and interview of that word, the self realization and self visualization of that divine power is told only by Hindus. And no religion has this power. No one could do this work. This is also a fact that we are not able to prove that today, but this philosophical principle is written in the books. This is the subject of direct experience and vision, not able to prove. So there is the principle of rise and fall, and we are passing through a period of decline. That's why our culture has disappeared. But there is a limit to downfall. What happens when there is no space to fall? There is upliftment. Wheel of time does not stop. So the upliftment of this religion, this philosophy has started from this country. No power in the world can stop it. This religion cannot run with money. God cannot be controlled by Maya. Can you control God with Maya? So the mantra is worshipped considering the origin of the origin of the universe from the word. Lord Krishna has called it the best yagna in the Gita, in the 10th chapter. In the 25th verse, it has been said, among the yajnas, I am the Jap yajna. Nam Jap is the best yajna. Manu says that by chanting this yajna, Manu has said in Smriti that by chanting this, there is 1,000 times more benefit than ritualistic yajnas. And Mahabharata says there is no violence in this yajna in the form of chanting of the name. If you burn butter oil or ghee and wood in the fire, the living beings will get burned
to an extent. But there is no violence in this. Therefore, just chanting the mantra will bring about a transformation in you. So all that transformation happens with the relentless mental chanting on the mantra given by Guru Siyag. And now we are going to play that mantra for you in Gurudev's blissful voice. And then we will just conclude this session. Yoga means a union of the soul with God or the universal consciousness force. What are the benefits of Siddhi Yoga? Siddhi Yoga heals, cures or frees the body from any physical illness, aids various forms of cancers, diabetes, arthritis, asthma and even genetic disease like hemophilia. In the case of disease such as AIDS, which attacks the entire body, the patient may experience internal kriyas like sensation or heat, electricity or tingling. According to Siddhi Yoga philosophy, the divine power awakened by the enlightened Guru gets transmitted through his blissful voice to the listeners, irrespective of language spoken by the Guru. This divine power transmissions occurs smoothly and remain unaffected by the language being used. A regular practice of Siddhi Yoga strengthens the immune system. The Kundalini acts as a protective shield of the immune system and wards off the onslaught or recurrence of any disease. Impact of Kundalini awakening. The Kundalini makes the practitioner perform kriyas that are specific to his needs. With this cleaning, the practitioner is cured of all kinds of chronic and even terminal disease such as HIV, AIDS, cancer, arthritis, etc. and genetic disorder like hemophilia. Mental application too are completely cured and stress is completely relieved. Cling, Krishna, cling, 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 cling, Krishna, cling. All right. So we just bow down in the lotus feet of Gurudev Siyag and we conclude this session today. And in order to know more about this, you can write to you can visit the website gurusiyagyoga.org, or you can drop me a message as well. I'm just dropping my number here. Please refrain from calling me. Just simply drop me a WhatsApp message. That would be good enough for me to connect with you. Thank you so much, Bhamar Singh ji, for your valuable time and insights. We'll meet you next week. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev.